One of our goal was to encourage women empowerment and thus enable them to make a good decision maker. So when I started this program, it was really difficult to find the community, how we are going to identify them, how we are going to encourage them, how we are going to motivate them to come out of their houses and then be a part of this program. It was really a challenge for us. Anna FM 90.4 megahertz. இது இந்தியாவின் முதல் பெடாக சமுதாய வானொலி Anna FM. Okay, when I commissioned the first campus community radio station in India at Anna University in the year 2004, I had three challenges. One, to prove to the world that community radio stations situated in campuses can also do good work, and both in quantitative and qualitative terms. Number two, how to attract the developmental agencies to fund projects through community radio. Number three, the UN Millennium Development Goals could be carried most effectively through community radio. जब पहली बार जो आवाज़ हम सुनते टाइम पे हमें ऐसे लगा कि हर बच्चे पूछे, मेरे बच्चे हैं ना, वो पूछने लगे कि मम्मी इतनी छोटी सी बॉक्स में तुम कैसे घुसे, तुम तो मोटी हो, इसके अंदर कैसे घुस के बात करती हो. तो वो दे डोंट नो हाउ एक्चुअली द रेडियो वर्क्स. கல்லூரியின் நிலா சமுதாய வானொலி. நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்கள் ஹோலி கிராஸ் சமுதாய வானொலி 90.4. After the pilot project was successful, we had gone on a very massive baseline studies in 13 different institutions in the country and also capacity building. Jamila Vijaya Selvakumari. நன்றி, வணக்கம். हम आप लोगों का जो वर्कशॉप लेंगे और उसी वजह से आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा और जो वसुंधरा वाहिनी के लिए कुछ चाहिए वो हम आपको सिखा देंगे. तो मुझे श्रीधर सर ने जो बताया कि हम आसपास के गांव में जाके रेडियो कौन सुनता है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, कौन से प्रोग्राम प्रसारित किए जाने चाहिए. तो हम गांव-गांव जाकर ये देखते थे कि लोगों का कैसा रिस्पांस है कम्युनिटी रेडियो के लिए और क्या सोचते हैं वो, क्या हम जो भी प्रोग्राम उन तक पहुंचा रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल है या नहीं. We went for a survey to the nearby villages. So what she told to me was Nila FM is our only companion. मेरा नाम मुमताज बेगम है. मैं 30-55 साल से काम कर रही हूँ. एफएम में बोलते सो ठीक है वो, और सुनने पे अच्छा भी है. नमस्कार, मैं प्रतिभा आपनो रेडियो वनस्थली से हूँ और आज हम यहाँ पर एक गांव में है चिकाड़ा में, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे रेडियो के प्रोग्राम लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं और क्या क्या सीखने को इन्हें मिल रहा है. अच्छा, रेडियो की बात जो भी आपने कोई बताओ तो वो समझ में आओ, अच्छी लागत है, माने जीवन में अपनाओ हो ना, जो की लागत बढ़िया बढ़िया बात करे वो आज से ही आओ है ना, बात करना तो आज से रेडियो में खबर भी सुना था तो वह भी सही आओ. दुसरी माझी ओवी ग तुळशीचे रोप, देवा घरी लागे सुखाये रे बा विठ्ठला. When SEMCA took on this project Science for Women that was to be articulated through the community radio stations, the biggest challenge you might say before us was to bridge a gap between the universities which had the campus radio stations, and they were in a sense the custodians of the community radio stations, and the communities on the other hand for whom this was a golden opportunity to appropriate a simple technology for their development. வான் அலைகளில் வலம் வருவது ஹோலி கிராஸ் பெண்கள் கல்லூரியின் பண்பலை சாரல்.
90.4. The first was the baseline study, which helped the universities know who are the communities who live around the station, and it gave the community an opportunity to see what lies within the four walls of the university, and here is a station and here are people who can actually help them learn and master these technologies. During this program, we tried all the elements of our science communication, starting from observation, collecting data, its analysis, and then the final report. So we included all these elements through baseline survey, capacity building, and then the final production. Most of them coming in Anna FM, they are all housewives. Doing all their household works, finishing all their works, taking care of our children, sending them to school, and then we go there and sit only for 1 hour and we do the programs and we return. Then we feel it very happy, you know. Hello Swati, வணக்கம். வணக்கம் மேடம், உங்க பேர் என்ன? என் பேர் சாந்தி. சாந்தி, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேடம்? நான் யாவின் பால் வாங்கிட்டு இருக்கேன். The sense of ownership which the community has with such radio stations is something phenomenal. This has resulted in several benefits which are very interesting for social scientists. हाइजीन, न्यूट्रिशन, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ वहाँ से मिलती है, सुनने को आती है। और औरत लोग मेरे को बोलती है, आज हमने सुना सेवगे के बारे में सुना, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया, अरे कितना सेवगा अपने दरवाजे में रहता है, फिर भी अपने को मालूम नहीं रहता कि इसका मतलब क्या है, ये लेने से क्या होता है, आँख की सूजन कम होती है, आँख की मिलान, ये रेडियो से सुना उन्होंने। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ, ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਭਰਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਚਟਨੀਆਂ ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਿਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਫॉर वुमेन। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे रेडियो बनस्थली में करे हैं रिगार्डिंग द हेल्थ अवेयरनेस। उसमें से खास करके जो है हमने किए हैं, एक तो एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर और एनीमिया से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं हमारे। और मीनोपॉज पे भी हमने किया है, विलेजेस जो है हमें कॉल करते हैं और हम उनका आंसर देते हैं फ़ोन पे। These were opportunities where, you know, the radio would provide a platform for the women to talk about their fears and at the same time have a doctor or a nutrition expert from the community who they interact with even otherwise, you know, to come on a common platform and explain the basis for it. जो महिलाएं सुनती है, जो गांव वाले सुनते हैं, मुझे स्वास्थ्य संबंधी जैसे डॉक्टर लोग वगैरह आते हैं कम्युनिटी रेडियो पे, तो उनसे वो सवाल वगैरह पूछ सकती है। बच्चों के बारे में बता रहे हैं, अगर बच्चों के डॉक्टर आते हैं, जैसे महिला आती है, महिला डॉक्टर, तो जैसे वो गर्भवती महिलाएं होती है, अगर उनसे कोई पूछना है तो वो पूछ लेती है, उनसे उनकी जो सवाल होता है उसका आंसर उन्हें मिल जाता है। இப்போ நான் உங்க கிராமத்துக்கு வரேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்னெல்லாம் சுத்தி காமிப்பீங்க உங்க கிராமத்தை எனக்கு? இங்க வயல்வெளிலாம் நல்ல வயல்வெளி, அப்புறம் ஆமா அங்க பக்கவா இருக்கலாம். ஹலோ ஹலோ சார், இப்போ நீங்க காலேஜ் படிக்கிறீங்க இல்லையா? The ladies who have come forward through this program, now they are ready to work for the society. Their voices are being raised because this is a program for voice of the voiceless. अब घर वाले लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लड़कियों को समान बनाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए गांव वाले भी रेडियो की द्वारा सुनकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ दूर करने की कोशिश भी की है। अब तो मैंने सब गांव बस्ती में सब आस पास में यही खबर है, अगवाई दाई माई का कोई विश्वास में मत रहो, और रेडियो भी सुनते और सब कन बात का सब आवे, कोई मीटिंग भी कोई बारिश में समझा वाला आवे तो वहाँ कन सुनता रहो, बाहर समझता रहो, और फिर डॉक्टर का ही बताना चाहिए। रेडियो बनस्थली से ये जो प्रोग्राम आता है वो हमने सुना है, लेकिन ऐसे झाड़े के बारे में तो कम विश्वास करना चाहिए और डॉक्टर के पास ले जाने में ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। அவங்கெல்லாம் நல்லா குத்துவாங்க, கொள்ளுவாங்க, கம்பு கேவுரு எல்லாம் செய்தாங்க. கிழங்கு ரைஸ் மில் போட்டுக்கே பால் மாறுறாங்க, நெல்லியை போட்டுட்டு அரிசிட்டாங்க சாப்பிடணுன்றாங்க, உடம்பு நவாது, அது எப்படி செய்வாங்க? This workshop is mainly conducted to based on healthy nutrition foods. How villagers used to get this, they get to know about this healthy nutrition foods and they used to know about this. This is very useful for the younger generation people, and this is groundnut. It is very healthy food. Now this was an opportunity for us to look at all of those, document them, have them validated by nutrition experts, and then give it back to the community and tell them, look, this is what you have, so go ahead and do that. So this has really worked out as a very nice dynamic exchange platform where you can share your concerns, share your beliefs, take away what works for you, and debunk what really has no scientific basis. So in that sense, Science for Women has really worked very well for the women and the college too. आईनी मेलने जाईनी मेलने बन के पराणी जाईनी मेलने बन के पराणी जाईनी मेलने बन के पराणी जाईनी मेलने। मी ते कार्यक्रम तर सगळेच ऐकते, म्हणजे सुरुवातीपासूनचे, पण त्यातून आत्मजा तुमचा जो कार्यक्रम सुरू आहे त्यातील डॉक्टरांचे मुलाखती असतात, त्याचा माझ्यासाठी तरी वैयक्तिक फायदा होतोय. புதிய ஜனன மெடுப்போம் அறிவியல் அறிந்து அறியாமை ஒழித்து சிந்தனை சிற்பியாய் எழுவோம், சிந்தனை சிற்பியாய் எழுவோம். நாங்கள் எஃப்எம் ரேடியோலாம் கேட்குறோம், ஆனால் எங்ககிட்ட இல்லை ரேடியோ, பக்கத்து வீட்டில் வந்து கேட்குறோம் நாங்கள். அதில் வந்து எல்லாம் குழந்தைகளை பற்றி, சமையல் பற்றி, அப்புறம் மாதவிடாய் பற்றி, அப்புறம் எய்ட்ஸை பற்றி எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க. எஃப்எம்லேயே எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை பற்றி. While I was doing this program, I felt so happy, like I'm doing something good to the community where I can tell something sensible to the community. Talking about HIV is basically a sensitive thing, but still when we talk about HIV only, people come to know what is actually HIV and what is the disease is all about. ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ FM ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। And now when I am looking at the impact of this program, it is really enormous. I would like to envisage a much stronger partnership as far as science and development communication is concerned, using the community radio as the desired format. We would like to take this to other Commonwealth countries in the Asian region. फिर मिलांगे, सत श्री अकाल।